Assalamualaikum, myself Waqar Randhawa, and I welcome you on the platform of telemedical education. So, guys, here Telemed's research team in collaboration with NMU Multan, Nishtar Medical University Multan, ठीक है. हमारा प्लान जो चल रहा था रिसर्च टीम के बारे में, जो रिसर्च हम सेशंस कर रहे हैं ऑलरेडी जो कंडक्ट हो रहे थे प्रीवियस इन कोलेबोरेशन विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान about research, especially focusing and emphasizing medical research for undergraduate students, for medical students. ठीक है. तो आज का बेसिक जो सेशन है वो टेलीमेड्स ईडीयू टेलीमेडिकल एजुकेशन जो ऑनलाइन नेशनल वाइड ई प्लेटफॉर्म है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं इन कोलेबोरेशन विद निश्तर टीम. ठीक है. निश्तर की जो बेसिक टीम है वो आज हम बेसिक ब्रीफ करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे. अब्दुल्ला है हमारे साथ, अहमद अंसारी हैं, अली मेहदी हैं, और हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर हामिद हसन. इनके साथ बेसिक आज हम एक इनागुरेशन करने जा रहे हैं. ठीक है. एक लॉन्चिंग करने जा रहे हैं हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की टू कंडक्ट स्पेशली फॉर निश्तर मेडिकल ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. ठीक है. तो बेसिक जो है हमारे पास टेलीमेड्स ईडीयू के प्लेटफॉर्म से हमारे पास रिसर्च हेड हैं आमना अनवर. आमना अनवर बेसिक आप लोगों को बताएंगी कि हमारा प्लान क्या है, हम किस तरह रिसर्च को लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं जिसके थ्रू हम कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं रिसर्च फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. ठीक है. So over to you, Amna. Can you please share the Hello, main plan of am the I next audible? Hello? Yes, you are Yes, you audible. are Please. Hi there. So I would like to welcome everyone onto this platform to the live webinar today. It's a great experience with the collaboration team. We've been collaborating with a lot of other universities across Pakistan, and I'm proud to say that because of Telemed Education and along with their collaborating teams, we are able to hand over to these webinars live. So I would like to start off actually with my experiences, my personal experiences with publishing research papers. The first experience I had was with the first question the risk of MI in diabetic patients. My second one that I published was non-compliance to vaccination amongst healthcare workers. And the most difficult one of these two is actually the non-compliance one because of the fact that there was COVID pandemic. It was slow, the data collection was halted, and it's still yet to be published actually. And this is just a small sort of brief summary on the complication that you may face when publishing a research paper, and that is normal, especially during the COVID pandemic and everything. But you just need the perseverance, and you need to have the persistence of carrying on. Even with all of this, I still published an article about the conference with HLA, which is an Imperial College London, representing my university. So this is basically some sort of an idea that you can get on because of all of these platforms that I even attended in my undergraduate course. I want all of you guys to also take that initiative and start your own journey. So that was like a small introduction. What we plan on doing is having a lot of other webinars, a lot of sessions to carry out, a lot of conferences that we would all like to see you there as well. I'm just going to hand it over to the chairman of the physiology department, and who also has extensive research background. He's published many articles yet to come, and I'm pretty sure that everyone is really excited to hear from him. So it's over to you, Dr. Hamid Hassan. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm really honored that you actually invited me over here, and we can actually give some feedback and our own experiences regarding the undergraduate research, which is almost at a negligible level happening within Pakistan at the particular time. Um, I returned to National Medical University in 2017. I was an Estonian myself, and it was my dream that I should return back to my alma mater and to teach over there. And when I came back, I came to know that the situation at the academic front was seriously very bleak. And one very important drawback, which I came to know and observe while I was being there, specifically being the chairman of the department, also, that whenever our undergrads complete their course at the med school and they start to compete at national and international level, and they start to apply for various jobs, they're totally out of competition. First, because their marks are too few at the prof level, and then they do not have got any research experience or a publication on their account. And as a result of that, they either have to go to the periphery for a couple of years, and even for that, they have got to wait for approximately 2 or 3 years in the due course, which is of course a very depressive time, because if you have done your graduation and you're just sitting at your house and you're
not able to do something productive. So that makes the bestest of the best graduates feel very depressive, and they ultimately either fall out of the process or lose the hope. So we started took the initiative and started the undergrad research at the level of the university. Of course, it was a very difficult time because the people were not aware, the resources were not there, and it was seriously very difficult to convince the youngsters also that the research work is going to help their CV and is going to increase or enhance the prospects of theirs to compete at national and international level and to get the jobs at the PHUs or the job of medical officer through which you ultimately get inducted into the health system. Anyways, despite all the hurdles, I started with the very first batch, which is now currently in final year. The projects went quite well. The indulgence of the students at the very initial level was minimal, but over the period of time, it geared up. So we had 4 projects in the session, which is now currently in final year. Then we had 3 projects in the coming year. Then we had 8 projects in the coming year. Then we had another 8 projects in the coming year, and then we have got 2 projects in the current first year also. So at undergrad level, we are running at least 16 or 17 projects, and most of the projects are designed as per international standards, and they could be published anywhere. One of them actually competed in an international conference, and I topped the whole of the conference where the candidates and the delegates from at least 17 countries, European, North American, South Asian, Asia Pacific countries, they were competing, and we actually talked about that. So instead of rather me talking about it, how exactly the research is conducted, because I think at my level, I had enough of the projection, and I consider as an educationist that the students are an educationist legacy. So I will prefer that the description and the summarization of the process, the hurdles which were faced by undergrads and how they overcame that, and how they actually reached to the process of or to the stage of publication of a research project. That should be briefed by my own team leaders who are working with me. And today I've got 2 of the pioneers with me, Mr. Muhammad Abdullah and Mr. Muhammad Ahmed. One of them has already published one, the other is near the publication. And then we have got a very special guest over here who is currently in 4th year MBBS. He started his undergrad research project with me while he was in his 2nd year. And he competed at international level and he topped that particular project. So I will like that Mr. Ali Mehdi, who actually has done and achieved a milestone over here, specifically at the undergrad level, should be the one who should talk instead of me talking over here. So I like to extend the podium to the chairman, who can perhaps invite Mr. Abdullah or Mr. Ahmed in whatever sequence that is feasible. Over to you, Mr. Chairman. Ahmed, please unmute your mic first. अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर हामिद हसन कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और निश्तर की जो है एक निश्तर का जो सबसे बड़ा प्राउड है वो ये है कि डॉक्टर हामिद हसन ने निश्तर में आके अंडर ग्रेजुएट रिसर्च पे जो है वो बहुत मतलब उसको बहुत फोकस करके इस काबिल बनाया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके अंडर इस वक्त चल रहे हैं। यानी कि उनका बेसिक फोकस जो रहा है वो अंडर ग्रेजुएट रिसर्च पे रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर हामिद हसन ने अब्दुल्ला और मुझ पे इस कदर उन्होंने मेहनत की है, और यानी कि उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया है कि ना सिर्फ हम लोग जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकें, बल्कि हम लोग इस काबिल बन चुके हैं कि हम लोग अपने जो जूनियर्स हैं, ना सिर्फ जूनियर्स बल्कि कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं जिन लोगों को हम लोग गाइड कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से, और उनको जो है वो उनकी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, बिफोर आई शेयर माय एक्सपीरियंस अबाउट रिसर्च विद डॉक्टर हामिद हसन, मैं जो है वो थोड़ी सी इसके रिसर्च के बेनिफिट्स पे बात करना चाहूँगा कि रिसर्च जो है वो हम क्यों कर रहे हैं। व्हाई अ मेडिकल अंडरग्रेड नीड्स टू डू रिसर्च, नीड्स टू कंडक्ट अ रिसर्च। उसके लिए जो सबसे बेसिक जो चीज़ है, जब हम लोग अपनी हाउस जॉब कर लेते हैं और जब हम अपनी जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें रिसर्च के 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है।
और जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही हम लोग रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो इस कदर बढ़ जाता है। जब हम अपना जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हम लोग पेपर्स जो है वो कंडक्ट रिसर्चेस जो है वो खुद कंडक्ट कर सकते होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो सीआईपी है उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं इसके रिसर्च के, और बंदा जो है वो पेरिफेरी पे जो काम मतलब उसको जो जॉब करनी पड़ती है, ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं बीएचयूज़ में, उससे भी बंदा जो है वो सिर्फ रिसर्च की बेसिस पे, रिसर्च के पॉइंट्स की बेसिस पे जो है वो उनसे बच सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा रिसर्च के हवाले से। मैं फर्स्ट ईयर में था जब एक अनाउंसमेंट हुई क्लास में डॉक्टर हामिद हसन की तरफ से कि आप लोग जो है वो रिसर्च की तरफ आएँ। तो सबसे पहले तो मुझे जब वो ऐसा फ़ील हुआ कि यार ये रिसर्च तो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है और अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम लोग क्यों करें रिसर्च? हमें क्या ज़रूरत है रिसर्च करने की? तो डॉक्टर हामिद हसन ने जो है वो हमें समझाया कि यार रिसर्च करो, इसके जो है आगे बहुत आपको फ़ायदे होंगे, और मतलब उन्होंने आसान करके रिसर्च को जो है वो हमारे सामने रख दिया। तो बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जिन लोगों ने फिर रिसर्च को जो है वो रिसर्च करने की तरफ आ गई, बहुत सारी टीम्स, और स्पेसिफिकली उसमें मैं भी था। और जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें जो परेशानी आती है, परेशानी तो नहीं कह सकते, जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि आपने टॉपिक कौन सा चूज़ करना है। तो इस हवाले से डॉक्टर हामिद हसन ने हमें गाइड किया कि टॉपिक आप वो चूज़ करें जो आपके लेवल के लिए फिज़िबल भी हो और मार्केट में उसकी मतलब हमारी जो मेडिकल फ़ील्ड है, उसमें उसकी डिमांड भी हो। अब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो हैं ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं जो बहुत कॉमन हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गई। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसी कॉमन चीज़ को उठाकर उसको किसी एक फैक्टर के साथ रिलेट कर दिया जाए। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने वो फैक्टर जो है उसको स्मार्टफ़ोन बनाया। हम लोगों ने स्मार्टफ़ोन को रिलेट किया एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के साथ, और उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने देखे कि एकेडमिक्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। अब जब हम लोगों का टॉपिक फाइनल हो गया, अब टॉपिक फाइनल करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो है आपको अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस देखनी पड़ती हैं और टेक्निकल लिमिटेशंस देखनी पड़ती हैं कि क्या, अगर आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप इस काबिल हैं कि आप इस चीज़ को कंडक्ट कर सकें? क्या आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप ये चीज़ें कंडक्ट कर सकें? अब बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज़ थी जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक्स पे रिसर्चेज़ हो गई। तो हम लोग इस साइड पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं जाते। हम लोग जो है वो बेसिक्स की तरफ रहते हैं और फिज़िबिलिटी देखते हैं हम लोग अपनी। अब उसके बाद जो बेसिक चीज़ आ जाती है टॉपिक फाइनल करने के बाद, हम लोग अपने स्टडी डिज़ाइन पे वर्क करते हैं। और स्टडी डिज़ाइन पे वर्क करने के लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस लेनी होती है डिफरेंट आर्टिकल से। अब शुरू-शुरू में हम लोगों को तो नहीं पता था कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें, वी जस्ट यूज्ड गूगल। तो बाद में हमें डॉक्टर हामिद की तरफ से पता चला कि आप लोगों ने सिर्फ गूगल को नहीं यूज़ करना, बल्कि गूगल ने एक स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है, गूगल स्कॉलर के नाम से, जहाँ पे मुख्तलिफ रिसर्चेज़ जो हैं वो ऑलरेडी लोग पब्लिश, मतलब जहाँ पे उनकी मुख्तलिफ रिसर्चेज़ पाई जाती हैं ऑलरेडी। तो आप वहाँ से जाएँ, कीवर्ड्स डालें अपने और उनको स्टडी करें, और जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेट करती है वो आप अपने पास नोट डाउन करते जाएँ। और इसी तरह एक और वेबसाइट है पबमेड के नाम से, जिस पे ऑथेंटिक आर्टिकल्स मिल जाते हैं हम लोगों को। यहाँ से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की, अपना जो है वो स्टडी डिज़ाइन जो है वो फाइनल किया। स्टडी डिज़ाइन फाइनल करने के बाद जो है उसके बाद हम लोग साइनॉप्सिस वाली साइड पे चले जाते हैं। पहले-पहले तो जब साइनॉप्सिस का वर्ड हमारे सामने इस्तेमाल हुआ, तो हम लोगों को पता नहीं था कि साइनॉप्सिस साइनॉप्सिस जो है वो होता क्या है बेसिकली। हमने कहा पता नहीं कोई मुश्किल सी चीज़ होगी और क्या चीज़ होगी, लेकिन नहीं। अ, डॉक्टर हामिद मेड अस डॉक्टर हामिद ने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। उन्होंने एक-एक चीज़ जो है वो हम लोगों को एक-एक चीज़ आसान करके हम लोगों को बताई, और उन्हीं की बदौलत जो है वो हम लोगों ने अपना मतलब एक साइनॉप्सिस सबमिट भी किया है। अच्छा, अब बेसिक्स साइनॉप्सिस की थोड़ी मैं बता दूँ आप लोगों को। साइनॉप्सिस जो है वो बेसिकली एक आपका जो है वो इंट्रोडक्शन होता है जस्ट आपकी रिसर्च का, जो आप एथिकल रिव्यू कमेटी को देते हैं अप्रूवल के लिए। अब
जो साइनॉप्सिस है उसमें बेसिक हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक्स डेफिनेशंस, आपकी जो स्टडी है उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि आपकी जो स्टडी रिसर्च जो है वो मेडिकल फील्ड को किस तरीके से फैसिलिटेट करेगी या क्या फ़ायदा पहुंचाएगी, ये तमाम चीज़ जो है वो आप अपनी उसके इंट्रोडक्शन में बताते हैं साइनॉप्सिस के। और इसके साथ मेथोडोलॉजी भी आ जाती है। मेथोडोलॉजी में हम लोगों ने वो तमाम तरीके बताने होते हैं, वो तमाम स्केल्स वगैरह बताने होते हैं, जो हम लोग अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मेथोडोलॉजी भी हो गई। इसमें जो स्केल्स वगैरह यूज़ करते हैं, पहले तो हमें ये पता होता था कि यार क्वेश्चनेयर हैं, बनाने पड़ेंगे, खुद बनाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं। जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्केल्स जो हैं, ऑथेंटिक स्केल्स जो हैं, वो हमारे मुख्तलिफ आर्टिकल्स में लोग यूज़ कर चुके होते हैं, जिनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हमसे रिलेट कर रही होती है। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रिसर्चेज में। और जब साइनोसिस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको एथिकल रिव्यू कमेटी के पास, जो निश्तर की है ईआरसी, तो उसके पास आप सबमिट करवाते हैं, ताकि वो जो है आपको फर्दर रिसर्च कंडक्ट करने की जो परमिशन है वो दे दे। अब ईआरसी से ऑनवर्ड्स जो है वो अब्दुल्ला आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है रिसर्च का। जी अब्दुल्ला। Thank you so much, Ahmed, and I would like especially to thank Dr. Hamid Hassan, not only for handing over the mic to us, लेकिन जो उन्होंने हमें अब तक इल्म दिया है जितना, and I'm audible ना? Am I audible? Am I audible? जी जी। तो इट वाज लाइक हम अपनी इस फर्स्ट ईयर में थे एंड देयर वर फ्यू पीपल सीनियर्स जो रिसर्च कर रहे थे, या देयर वाज जस्ट इन बिगनिंग, और हम सर के ऑफिस में बैठे हुए थे। तो हमें लगा कि ये काम बहुत आसान है और हमने कहा जी हम भी करते हैं। लेकिन मौके से हमें पता लगा साथ साथ करने के बाद कि इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्क, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, लेकिन इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। तो जैसा कि अहमद ने आपको बताया, कुछ उसने फ़ायदे बताए, तो आई वुड लाइक टू एड अ बेनिफिट इन दैट कि ना सिर्फ ये कि उससे आपको मार्क्स मिलते हैं, बल्कि दूसरी चीज़ वो है कि उससे जब आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ठीक है, उससे जो कुछ आप सीखते हैं, तो स्पेशली आजकल चूँकि पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रेंड है, तो वहाँ पर आपको एक थीसिस लिखना ही लिखना है। तो उस वक्त आपको फिर लोगों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि हमें सिखा दें, क्योंकि आपने पहले ही अपने अंडर ग्रेजुएशन में सीखा होता है, और अंडर ग्रेजुएशन एक ऐसा टाइम है जिसमें आप जो चीज़ सीखें वो ज़्यादातर देर तक परसिस्ट करती है, क्योंकि इस वक्त आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा काम कर सकता है। और सेकेंडली जो उसमें दूसरा आपको फ़ायदा है वो ये है कि आपको साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ना आ जाता है, और ये काफ़ी एक प्रिविलेज है कि यू नो हाउ टू गो थ्रू साइंटिफिक लिटरेचर। जैसे आपने देखा कि अभी कोविड का हालात रहे हैं, तो उन दिनों ऐसे डॉक्टर्स जो सिर्फ बुक्स पे रहे, या जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उनके लिए मुश्किल थी ऑब्वियसली। लेकिन उस कंडीशन में जिन्होंने अपने आप को अपडेट रखा कि किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है, उसमें से कौन सा इम्प्रूव करना है, दे प्रूव देमसेल्फ। सो इट connects to the scientific literature and makes you an updated doctor, not only a orthodox one, ठीक है। So talking about the experience, जब साइनॉप्सिस की बात यहाँ तक आपने अहमद ने आपको बता दिया, तो साइनॉप्सिस के बाद जब ईआरसी भेजा जाता है, तो ईआरसी जो है ऑब्वियसली इट इज ईआरसी इज एथिकल रिव्यू कमेटी, जो कि उसको रिव्यू करती है आपके साइनॉप्सिस को कि इज इट नॉट ब्रीचिंग एनी एथिकल थिंग, क्या कोई इसमें कोई एथिकल ब्रीच तो नहीं है, क्या इसको कंडक्ट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं, तो इट वाज लाइक कि ओबेसिटी का रिलेशनशिप क्या है डिप्रेशन एंजाइटी से, जो हम पब्लिश भी कर चुके हैं, और उसका रिलेशनशिप क्या है एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो ऑब्वियसली इसमें कोई एथिकल ब्रीच नहीं है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चनर फिल कराने थे, जैसा आपको जिक्र किया कि वो स्केल्स होते हैं। हमने AKU-ADS का स्केल इस्तेमाल किया, BDI इस्तेमाल किया, BAI इस्तेमाल किया डिप्रेशन और एंजाइटी को जज करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो इसमें हमने देखी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी कैसी थी, प्रॉफ में रिजल्ट कैसा आया, और जो इसमें ओबेसिटी के लिए हमने BMI और WHR यूज़ किया। तो इसमें एज सच कोई एथिकल ब्रीच नहीं था, तो ऑब्वियसली उसका अप्रूवल मिल जाता है आपके अपने इंस्टीट्यूट से। आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कमेटी होती है, वो आपको उसको अप्रूव करती है। जो अगला स्टेप होता है दैट इज डाटा कलेक्शन। अपेरेंटली बहुत सिंपल स्टेप लगता है कि हम लोगों के पास जाएंगे और उनको डाटा देंगे। जैसे कि सैम्पल साइज़ के मतलब की बात हुई कि सैम्पल साइज़ जो है हमारी कोशिश होती है कि समवेयर नियर 100 हो। अगरचा होना ये चाहिए कि सैम्पल साइज़ जितना बड़ा हो बेहतर है, लेकिन चूंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो हमारी कोशिश होती है कि सैम्पल साइज को 100 तक लिमिट रखें, 106, 110 तक चले जाएं, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकें। और इसमें एक और बात का इजाफा करूंगा कि ऐसा नहीं होता फिर हम कहते हैं कि हमारा परफेक्ट काम है। हम लिखते हैं अपने काम के एंड में कि हमने एक लिमिटेड सैम्पल साइज दिया, कोई और अगर स्टडी लाइन को यूज़ करता हुए बेहतर और लार्जर सैम्पल पे करे तो ये बेहतर होगा। तो हमने तो कि हमारा सैम्पल साइज ऑलमोस्ट 104 था टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें जब हम लोगों के पास जाते थे कि हमें डाटा दें,
तो लोग इतनी आसानी से डाटा नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो वो सिंपली क्वेश्चनर्स को जो है उसमें टिक मार देते हैं जो भी। तो इट इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप लोगों को इस बात पे राजी करें, उनको मोटिवेट करें कि आपने डाटा फिल करना है और आपने जो है अपना BMI और WHR देना है हमें। और उसमें भी BMI WHR में ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कहना है अपना कद बता दें या अपना वजन बता दें, हमें जो है स्पेसिफिक स्केल्स यूज़ करने हैं, हमें उनके साथ जो है वो स्पेसिफिक जो हम वेइंग मशीन यूज़ करेंगे हमें उसका मॉडल नंबर भी साइनॉप्सिस में लिखना होता है कि हमने कौन सी वेइंग मशीन यूज़ की है, हमने कौन सा जो है वो स्केल यूज़ किया है, हमने उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है। यानी हम बिल्कुल डाटा को अनबायस्ड बनाते हैं और बिल्कुल करेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो डाटा कलेक्शन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और इसके बारे में एक्सपीरियंस हमारा ये है कि इसको जितनी जल्दी कर लें और जितनी अच्छे डेडलाइन में कर लें तो बेहतर है। इसको आप जितना डिले करते हैं इट गेट्स डिफिकल्ट। और फिर डाटा कलेक्शन के बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज़ इवन मोर चैलेंजिंग इज़ डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में ये होता है कि इसमें एक SPSS है सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, जो लोग रिसर्च करते हैं वो जानते होंगे। तो इसमें हमारे पास ये एक प्रिविलेज है कि डॉक्टर हामिद हसन वो हमें खुद सिखाते हैं। आमतौर पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये होता है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो दूसरों से देकर उसको करवा लेते हैं कुछ पैसे देकर, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर है निश्चित में, और सर ने ही ये शुरू किया है कि हम लोग इसको खुद करते हैं, हम लोग इसको खुद सीखते हैं। और उसके लिए हम पहले भी एक वेबिनार खुद कर चुके हैं जिसका लिंक मैं इसमें कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, जो देखना चाहे बाद में देख सकता है, जिसमें हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव एनालिसिस का जो स्टडी डिज़ाइन है उसमें हमने बताया कि अगर आपके 2 ग्रुप्स है तो आपने उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे लगाना है। तो उस वेबिनार से भी यही चीज़ है कि हमने अगर सीखा है तो हम आगे सिखाने के लिए बेताब हैं, ठीक है। और ना तो इसका ये मतलब है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हम सीखना भी चाहते हैं और हम सिखाना भी चाहते हैं। इसीलिए जब वकार ने सर से इस वेबिनार की बात की तो हमने इसके लिए हामी भरी, और सर ने भी ये चाहा कि एज कम्पेयर टू डिफरेंट जो वेबिनार हुए हैं उसमें आमतौर पर जो प्रोफेसर हैं सिर्फ उन्होंने बात की, लेकिन सर ने चाहा कि हम जो लोग कर चुके हैं वो लोग बात करें, ताकि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि इट हैपन्स, ये हो सकता है। तो डाटा एनालिसिस जो है हमारी टीम ने किया, उसमें मैं नाम लूँगा, हमारी जो मेरी टीम थी उसमें मारिया सिद्दीकी, अफसान नसीर, आमना महमूद और नवेरा अयूब हैं, उनका बाद में आपको इंट्रो देंगे। तो बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छा, हम लोगों ने मिलकर जो है डाटा एनालिसिस सर ने हमें सिखाया, हमने उसको बार बार जो है उसके टेस्ट लगाए, काइस किए और डिफरेंट टेस्ट लगा के उसमें से फिर अब उसके बाद जो उसमें रिजल्ट आते हैं दैट आर आल्सो चैलेंजिंग। इसके बाद चूंकि हमारे पास रिजल्ट के बाद में आर्टिकल लिखना है तो उसमें 2 तरह की कंडीशन होती हैं, एक ये कि हमारा हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाए और एक ये कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो नल हो जाए। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारा जो हमने 3 स्केल यूज़ किए, AKU, ADS, BDI और BI। तो उसमें से एक जो स्केल था ना वो हमारे पास वैलिड नहीं आया, तो हमारे पास, अब हम परेशान हो गए, हम सर के पास गए, सर ये तो वैलिड नहीं आया। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें बताया गया, एक नई चीज़ हमें पता लगी कि इवन इफ आवर हाइपोथेसिस डज नॉट गेट प्रूव्ड, कि वो सही नहीं साबित होता, तो वी हैव टू सी क्या हमने काम ठीक किया। अगर हमने ठीक किया तो ऑब्वियसली कि हमारी कलेक्शन ठीक है, तो उसका मतलब कि वो उसमें मसला हो सकता है, स्केल में मसला हो सकता है। तो हमने उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया कि वो BI जो स्केल है वो साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए नहीं बना, तो यहाँ पर उस तरह वैलिड नहीं है। और हमने इस चीज़ को अपने आर्टिकल में लिखा। आर्टिकल में जैसे मैं बताऊँ आपको, आर्टिकल में एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बारे में अली मेहदी भाई भी बात करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, वो कहीं साइनॉप्सिस जैसा ही होता है, मेथोडोलॉजी। फिर जो आर्टिकल में साइनॉप्सिस की इजाफे में चीज़ होती है वो होती है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में हमें जो है कुछ ग्राफ्स ऐड करने होते हैं, कुछ टेबल्स ऐड करने होते हैं, और डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल, जिसमें हमने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है, उनको जस्टिफाई करना होता है। तो हमने जब आर्टिकल लिखा तो हमने उसमें जस्टिफाई किया कि जनाब ये जो हमने BIS किया है दिस इज नॉट अ कंफाउंडिंग फैक्टर, लेकिन ये हमारी पॉपुलेशन में यूजेबल ही नहीं है। और बज़ाहिर आप कहेंगे ये तो हमने चीज़ को गलत कह दिया, लेकिन व्हेन वी पब्लिश द आर्टिकल, व्हेन वी सबमिटेड द आर्टिकल टू पाकिस्तान जनरल फिजियोलॉजी, जो उसके जो चेयरमैन हैं मोहम्मद अयूब साहब, हमारे सर के भी उस्ताद हैं वो, तो उन्हें वो आर्टिकल इतना पसंद आया कि उन्होंने उसकी हमसे सबमिशन फीस भी नहीं ली। अगरचे सबमिशन फीस होती है आर्टिकल की कुछ 8 या 9 हज़ार रुपये, तो उन्होंने हमसे वो भी नहीं ली, और ये ऐसे ही आर्टिकल से नहीं ले जाती जो आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं। तो वो गया, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिव्यू नहीं होंगे। उसके बाद वो कई बार रिव्यू हुआ, 2 से 3 बार वो रिव्यू हुआ, रिव्यूज़ होते हैं। और उसमें ये होता है कि 2 तरह के रिव्यूज़ हमारे पास आते हैं। एक वो हैं जो लॉजिकल होते हैं, जो हमें लगता है कि जी हमसे गलती हो गई है, उसमें टाइपोस हो सकते हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई टेबल में वैल्यू मिसकॉट हो सकती है। तो वो इसका तरीका ये होता है कि हम उसको ऑन कर लें और हम उसको सही कर लें। यानी कि इसमें ये बात बताने का मकसद ये है कि रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मेरी बात पत्थर पर लकीर है। इफ़ यू थिंक दैट देयर इज अ टाइप, यू शुड एडमिट इट कि हमने गलती की है, हम उसको ठीक करने को तैयार हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे रिव्यूज़ होते हैं जो इलॉजिकल हो जाते हैं, या फिर जो इसलिए हो जाते हैं कि वो हमने कोई और बात की होती है जबकि रिव्यूअर ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया होता है। तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ, हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ रिव्यूज़ आए, तो हमने फिर उनको जस्टिफाई किया कि हमने जो ये कंपैरिजन किया है, हमने जो कोरिलेशन किया है, हमने इस तरह किया है, और आप देख लीजिए इस रिसर्च में। तो ये एक
रिसर्च में काफ़ी एक अच्छा साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पर अगर आपको इख्तलाफ भी होता है किसी से तो वो कोई पर्सनल नहीं है, वो सिर्फ उस कंटेंट पे है और उसको हम ठीक करते हैं। तो इस तरह से रिव्यू के बाद आर्टिकल पब्लिश होता है और उसके फ़वाइद तो मैंने आपको बताए। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। अभी जो हम उसके बात कर रहे हैं, सर ने आपको बताया कि वो यहाँ पर मोर देन डजन टीम्स उस पर काम कर रही हैं और उनके लीडर्स भी हैं जिनके बात हम आपको बताएंगे अली मेहदी की बात के बाद। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड अप टिल नाउ। आई वुड हैंड ओवर दिस टू अली मेहदी, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अपने वेबिनार का, सेमिनार का। जी अली भाई। थैंक यू अब्दुल्ला। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी यू आर ऑडिबल। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for inviting me to this webinar. So basically हमारा जो एक्सपीरियंस रहा रिसर्च कंपटीशन में हिस्सा लेने का, वो स्टार्ट में हमें पता चला था कि एक रिसर्च कंपटीशन अरेंज हो रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन के लिए। सो स्क्रेच से हमने बिल्कुल स्टार्ट करना था। हमें कुछ भी रिसर्च के हवाले से कोई भी नॉलेज नहीं थी। हम सर हामिद के पास गए, थैंक यू सो मच अगेन फॉर हिम, और उन्होंने हमें बिल्कुल स्क्रेच से उन्होंने रिसर्च के बारे में सिखाया। हमें हमने जो टॉपिक दिया था उसके बारे में हमें प्रॉपर गाइड किया, हमें यहाँ इस लेवल तक पहुँचा दिया है कि हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि हमने बिल्कुल शुरू से रिसर्च को सीखा। हमने आर्टिकल पूरा कंप्लीट किया, अपना 6 मंथ का पीरियड हमें लगा, और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने सबमिट करवाया। तो वहाँ पे जो जजेस का पैनल था वो नेशनल लेवल पे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस से, जैसे कि आगा खान है, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इंटरनेशनली सर ने आपको बताया है कि कहाँ से रिसर्चर्स आए हुए थे। फिर उन जजेस के पैनल ने देखना था हमारे रिसर्चर्स को, और पार्टिसिपेंट्स भी ऑल ओवर पाकिस्तान से और इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो उनसे compete करना हमारे लिए इट वाज बिग डील फॉर अस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन दिस रिसर्च कंपटीशन। और बेसिकली जब हमने प्रेजेंट किया तो हमें पता चला कि हमारा जो मेथडोलॉजी का पोर्शन है, हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स, हमारी स्टडी डिज़ाइन और जो पोर्ट्रेयल ऑफ रिज़ल्ट है वो हमारा सबसे बेस्ट था, जो कि हमें सब कुछ सर हामिद ने सिखाया था, और जिसकी वजह से हमने ये पोजीशन हासिल की। बाकी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स के रिसर्चेस में स्टडी डिज़ाइन की मिस इंटरप्रिटेशन थी, या वो सैम्पल साइज़ को प्रूफ नहीं कर सके, या सैम्पलिंग टेक्निक उनकी सही नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फर्स्ट प्राइज़ जीता, और वी गॉट so much appreciation from international researchers. उसके बाद हमारा जो एक्सपीरियंस उन इंटरनेशनल रिसर्चर्स के साथ ये हुआ कि उन्होंने हमें गाइड किया, मज़ीद गाइड किया कि हम कैसे इंटरनेशनली हम अपना आर्टिकल पब्लिश करा सकते हैं और इंटरनेशनल अटेंशन हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने हमें हेल्प करने की भी ऑफ़र की कि वो इंटरनेशनली किसी प्रेस्टीजियस जर्नल में हमें पब्लिशिंग करवाएंगे। सो ये सारा क्रेडिट हमारे सर हामिद सर को जाता है कि जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया और इस लेवल तक पहुंचाया। फ्रॉम स्क्रैच ही बिगन preparing us. So this was all about my experience in the competition. So hand over to the host. Thank you so much, Ali, for guiding us well. So before going on, I would like to add the announcement. Waqar, can you hear me? Waqar, can you hear me? जी Abdullah, you're audible. So basically, this is an announcement. Should I do that, Waqar? जी जी, thank Carry you. on. So जैसे ये
जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारे पास सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं, जिसमें 12 से ऊपर टीम्स हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिर्फ उन टीम के लीडर्स हैं और कुछ मेरी टीम के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पहले हमने ये सोचा था कि इन सबको जो है इसी वेबिनार में हम इनका कुछ क्वेश्चन 3 या 4 मिनट का रखें, लेकिन डिस्कशन के बाद हमें आइडिया हुआ कि वेबिनार बहुत लेंथी हो जाएगा और 1.5 घंटे पर बात चली जाएगी, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा और उस तरह से हम सीख भी नहीं पाएंगे जो सीखना चाह रहे हैं। तो वकार ने हमें मशवरा दिया कि हम आने वाले दिनों में ईद के बाद एक पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इन सब पर जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, ये सब लोग हैं जो अपने साइन ऑफ से सबमिट करवा चुके हैं और अपने रिसर्च सबमिट करने के बहुत करीब हैं। इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो अपने रिसर्च सबमिट कर चुके हैं और बाकी लोग ऐसे हैं जो अपने रिसर्च सबमिट करने के बहुत करीब हैं। तो ये सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो एक सीरीज़ होगी 12 दिन की, 13 दिन की, जिसमें रोज़ एक वीडियो शेयर होगी और जिसमें उनका एक्सपीरियंस होगा। और वो वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो एक रैंडम सी वीडियो होगी, उसमें हमने पूरा जो एक्सपीरियंस जो भी मैंने और अहमद ने आपको बताया कि साइनॉप्सिस से पहले टॉपिक सिलेक्शन के बाद स्टडी डिज़ाइन के बाद जो है उसको साइनॉप्सिस लिखना कैसे शुरू करना है, उसके बाद उसमें सैम्पल साइज कैसे कैलकुलेट करना है, फिर ये जो डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, डाटा एनालिसिस कैसे करनी है। तो इनमें से हर शख्स जो है वो एक टॉपिक कवर करेगा और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और फिर अवेलेबल होगा आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो ये हमारा जो एक आइडिया हमें वकार ने दिया, तो हमने इसको फॉलो किया और थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ तक जो है मामला इस तरह चला। और एक बात का मैं इजाफा करूँगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग या निश्तर वाले जो है वो रिसर्च ही कर रहे हैं। हमारी जो है अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, वो अगर आप लोगों को पता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यूएचएस का रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का, उसमें थर्ड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन निश्तर की है। सेकंड ईयर के रिजल्ट में हमारी फर्स्ट पोजीशन जो है वो निश्तर की है, जो अमजद की। और फाइनल ईयर के रिजल्ट जो इस साल आया है उसमें भी थर्ड पोजीशन जो निश्तर की है। तो ना सिर्फ रिसर्च एंड, हम एकेडमिक एंड को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, उसके बाद मैं आमना को दूंगा। तो डॉक्टर हामिद, am I audible to you? Thank you for handing it over to me. Dr. Hamid, actually, I'd just like to ask a few questions, if that's okay. Yes, very okay, young lady. All right, so the first question is actually for me to publish a research paper. Get you? Sorry, can you hear me? No, yes, I can hear you now. Yes, so as I said, is it a requirement or is it necessary for me to publish a research paper? I like to answer this question quite in detail. I will say initially that, of course, it is absolutely essential for you to publish these days, because the phrase which we use these days in medicine is that either publish or perish. First, as Ahmed was telling, that there are certain parts of every research project which you conduct at undergrad level. Whenever you are competing for the post of medical officer or a demonstrator, or in public service commission, either in the Pakistan, or else you are competing for a match through PLAB or through USMLE, or through AMG, or whatever it is, whatever exam you want to set, wherever you want to go. There are certain marks for each and every research project which you have conducted at the undergrad level. Has to be published somewhere, which is a journal that is recognized by Higher Education Commission of Pakistan. The list of the approved journals could be seen at the website of HEC. So, if you have published something in a journal which is recognized by HEC, you are awarded certain marks. We all know that the private sector is slowly taking over the public sector when it comes to the medical education of Pakistan. So whenever you are graduating and sitting for any post-grad exam or any match, you are competing with lots of graduates of the private sector also. One way or another way, because the marks usually in the profs of the undergrads of the private sector are higher as compared to those of the public sector. There are several reasons for that, not necessarily that there is any corruption in the private sector. But also that several research projects are conducted by the private sector, but not in the public one. So when you are competing at a national or international level, if you have got a research paper, at least 2 research papers at your disposal, you are prevented from working in the periphery, or you get earlier matches and you do not have to wait after graduation and sit at home without doing anything, which is of course a very depressive thing. Similarly, when you are applying for a match in USMLE, or you're applying for a match after the PLAB or through Australian Council
or the Canadian Council or somewhere else. If you have got the research work, your CV is stronger, your matches become easier, and you can move out of the country also far earlier as compared to your contemporaries who do not have the research work. So yes, absolutely essential. We do use the phrase, as I've already said, that either publish or else perish. Over to you, young lady. Thank you so much for that answer. It was fantastic. It was such a great answer. The next question I have actually is, does it help me with working in Pakistan? Yes, of course, it does help you working in Pakistan. Uh, uh, First, as I have said, that once you have done your house job and you want to apply for the post of medical officer, either within a tertiary care hospital or a secondary care hospital or at a BHU, your matches become easier because it is awarding 5 marks to you within the Pakistani system for each and every uh, uh, research work. That is equal to one distinction. So if you have got research work at your disposal, specifically if you have got two research works, that is going to add 10 marks to your CV, and that is going to save at least 2 years of your working at a periphery where you are going to collect the same amount of marks and then come back and then complete in the system. So it is very, very absolutely essential that if you want earlier matches, you want earlier jobs, you want better positions, you want central inductions at better places, you should have at least two research works at undergrad level, which are published either during your undergrad, or at least you have got the submission confirmation that you have submitted and it has been approved somewhere. Moreover, within Pakistan, because whenever you go for the postgrad study, you have to go for a thesis. Either you are on the academic side or else you are on the clinical side, and that research work or the thesis starts with the synopsis, with the selection of a topic, with a collection of data, with analysis of data. And if you have already done it, you do not require to keep on indulging your seniors or the supervisors or the statisticians, which might not readily be available to everyone. And if you've already done it, it is very easier for you to conduct a research work on your own, and it reduces the dependency level to almost zero. Because of course, at times there are places where we need an expert opinion about something. Even at my level, when it comes to certain study designs, I require an expert opinion from my seniors, from my teachers, or at least uh, at certain times from a statistician or biostatistician also. But it reduces your dependency and you can conduct your synopsis, write your synopsis, get your synopsis approved, and then conduct a research work and analyze it and write a thesis on your own. So it saves a lot of time and it gives you lots of confidence and uh, the level of dependency which you can develop elsewise is almost negligible. So of course, I will say absolutely yes. It helps you a lot in various domains, not only in grooming you, in educating you, but making you confident and dependent also within the Pakistani system. Over to you, young lady. Thank you so much. I 100% agree with what you said. So the last question I have here is, how much time do I need to give to publish a research paper? Uh, this is a relative question. That depends on what was your topic and what was the methodology which you used while you were conducting your undergrad research project, uh, and depends upon the type of data also. But I will say that approximately it takes 3 to 6 months to write your synopsis and get it approved. And it once again takes 3 to 6 months to write your research article and submit it somewhere. Depending upon the availability of the slots, because in Pakistan and even all across the world, it is an OGS system where everyone is submitting and everyone can see that what is the number which is allotted to the submission. So your publication comes at your number whenever it was published. An earlier submission means an earlier publication, and a later submission means a later publication. So it takes more or less like 8 months to a year to submit an article after conducting a viable research work, and it takes approximately another 3 to 6 months to publish it. But that means that if you started your work in first year or second year, you can easily publish it in third year, and if you started a work in your third year, you can easily publish it in final year. It is very doable. Several of my teams are almost near publication at this particular moment because we started in 2017. The earliest teams have already submitted and they have completed, they have published also. The later teams are almost near to submission, and we are running like 17, 18 teams at undergrad level at this particular moment. So it is very doable because the people are doing, and if they can do that, I think that everyone else can do that. Over to you, young lady.
Thank you so much for answering those questions. I'm pretty sure that a lot of people have benefited from those answers. We've just got one from the audience. It says here, how to write a review article. If you can just briefly answer that for us, please. Yes, review article is written once you have got at least 5 original articles at your disposal or at your CV. Unless and until you have got certain of the journals say that 5, certain journals say 7, some of the journals also say that 4, but it is generally on the average 5 articles if you have written on the independent level. And they are at your CV, and they could be verified in the journal. Whichever you want to write a review article for gives you the slot or gives you the opportunity that you can review and then do a meta-analysis of the studies and submit a review article. But before you have at least published 5 original articles, you cannot go for a review article. Over to you. Thank you so much for answering all of those questions. It's really appreciated. We'd just like to conduct this webinar. I'm going to hand it over to Waqar. I'm not sorry to interrupt you. There is another question in the audience, and that is a very important one. Should I take that, please? Yes, of course, of course. So it is that we don't have such opportunities. Please guide. उनका कहना है कि उनके यहाँ ऐसी committee exist ही नहीं करती और ERC, I don't know which from which college. So they don't have this opportunities. So how should they conduct research? I think so that the world has now become a global village, and the students of medical colleges are connected all very well together. I, because I very closely collaborate with the students, so I have an idea that if one thing happens at college, इससे पहले कि वो खबर उस college के उस्तादों तक पहुंचती हो, वो दूसरे college के students तक पहुंच जाती है. So if they can use this particular fora of technology to communicate this fast, I think they can guide on online fora also how to conduct, or the teams which are working with me. ये तमाम की तमाम जो teams हैं, they are very well equipped. They're not only giving guidance to undergrad students, but they are giving guidance to postgrad students also, both on campus and online. So if the people are willing, they just need to get to these particular team leaders and through them to me, and we will guide them online, either through a conference or sending them voice notes or sending them tutorials or taking them on board on a webinar, which usually happens locally at our institute. So we'll be willing to extend the guidance to those particular people and who do not have such societies or opportunities at their institutes. I think that they should not be feeling left out. There are certain ways through technological advancements through which they can get the guidance. And in this particular, because Abdullah has said, and this is a certain question, because I very frequently quote Faiz Sahib, or even in my lectures, I quote Faiz Sahib quite a lot. So I will like to respond to this in the words of the Faiz Sahib. Faiz Sahib was encountering a dilemma similar to this while he was in jail, and some sort of question similar to this was asked to him. So he gave the answer in a very poetic way, and I would like I should give the same answer to the student who has asked this particular question because of regarding the lack of opportunities. So Faiz Sahib said that इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा, ख्वाबों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद आके करेगा ना अब कोई ख्वाब बसेरा, शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है, हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है. Over to you, young lady. Thank you so much. That was very nice. I know we are running out of time, but there are 2 more questions, if you allow me. Gigi Abdullah, carry on. So there is a student, Asrar Ali, from Nutrition and Diabetics, and he wants to know that if it's feasible for them to be in research and how. He's not from MPS, he is from Nutrition and Dietetics. As far as I do know, the students of nutrition and dietetics, of course, they can get part of the medical researches.
But for this particular thing, they will have to become part of a team who's consistent of either undergrad or postgrad medical students who are working on one way or another way on the aspects of diet or nutrition or the chemical composition of a particular constituent of diet on the physiological parameters of human body. For example, the people are working on the effect of refined carbohydrates or the effect of HDL or LDL on atherogenic health or on the glycemic health, or the effect of cola drinks or the carbonated drinks or the refined carbohydrates on the obesity or endocrine status of the people. So of course they can be part of it, and it is rather good because in medicine we are not very aware. We had wanted to conduct certain nutrition based research projects, but we could not conduct it because we never knew that what is the exact composition of a slice of pizza. We never knew that how many calories a slice of pizza in Pakistan would have. What would be the amount of refined carbohydrates? What would be the amount of LDL and HDL? And if a student is consuming at least one slice of pizza at least twice a week, what is to be the effect on his blood glucose level or his LDL level or HDL level or on his endocrine status? So we had thought of, but we could not find a reference regarding that which would tell that this is the exact composition of a slice of pizza in Pakistan. Of course, we could find the references which were European and American, but we know that the composition of pizza that were totally different over there. So for Pakistan, we could not get that. I think it is better if we have got nutritionists on board certain research projects because it helps and it makes it easier for the doctors to conduct certain nutrition-based research projects. Over to you. Thank you, sir. And I hope this one next question is going to be the last one. It is related to the previous one that if the college don't have the ERC committee, so how can they get the approval? All right, this is not possible. Every college has got an ERC committee. This is a requirement of PMDC, now PMC also, that each and every college is required to have a journal or at least have an ERC publication at another journal. There would be an ERC, it might be incumbent, but this is not a possibility that an institute does not have an ERC. They are always there. Okay, thank you so much. So I think Rani Fazia Gul, you got your answer that there must be a committee, but that will not be functional. So over to you, Waqar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone for joining, for listening. And first of all, thank you so much, sir, for your great services. माशाल्लाह से जैसा हमने सुना था, आप वाकई ही इल्म के एक समंदर हैं। बिल्कुल आपका रूम एनवायरनमेंट भी बता रहा है इसी से, और वैसे भी हम देखते रहते हैं आपका जो स्पेशल म्यूजिक रिलेटेड या फोक म्यूजिक रिलेटेड जो ग्रिप है, और जिस तरह मेडिकल पे नॉलेज में ग्रिप है, माशाल्लाह हाईली अप्रिशिएटेड। एंड एक यानी कि एक एस्टीम चीज लगती है, हमें भी लगता है कि यार दिस शुड बी फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से जैसे आपने बताया था अपनी टीम के बारे में, टीम भी माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड है, और जैसे इनके लीडर्स के बारे में बता रहे थे, हमारा प्लान भी यही था। बेसिकली देखो यार, टेलीमेड्स ईडीयू जो है, हमारा मेन एम यही था कि एम्पावरिंग मेडिकोस प्रोफेशनली, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को हम एम्पावर करेंगे प्रोफेशनली, ठीक है। तो जब सर से हमने डिस्कशन की तो सर ने बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उसके बारे में बताया कि मेरे पास इस तरह टीम्स हैं, तो हम अच्छे वे में करना चाहते हैं। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना हम इसे ब्रॉड वे में करें, अगर इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और वाकई ही वो कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन ये कोई छोटी बात नहीं है। निश्चित माशाल्लाह एकेडमिक्स में तो लेते रहते हैं, ऑब्वियसली ईयर भी ली हैं, लेकिन रिसर्च में कम्पीट करना, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पे कंपटीशन में जाके कम्पीट करना और फर्स्ट पोजीशन अचीव करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो अब हमने यही मेन प्लान किया है। सर के साथ भी कल यही फाइनल हुआ था, टीम के साथ भी। अब्दुल्ला एंड अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एंड ऑल कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। बेसिक का प्लान यही है कि ईद के बाद हम इंशाल्लाह सीरीज लॉन्च करेंगे स्पेसिफिकली फॉर निश्चित रिसर्च टीम। जो ये टीम है, ये लोग बेसिकली जी बेसिकली जिस तरह यानी कि ये लोग कर रहे हैं अपनी जितनी एफर्ट्स, जितने इन्हें इश्यूज आए, अली मेहदी बता रहे थे, अब्दुल्ला बता रहे थे, जिस तरह जो इश्यूज आए, देखो जो स्टूडेंट अप्रोच होती है, जो एक टीचर बता रहा होता है ऑब्वियसली वो चीज़ है, लेकिन जो स्टूडेंट अप्रोच होती है उस लेवल पे हमें जिस तरह चीज़ें समझ आ सकती हैं दूसरा कोई नहीं समझा सकता। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह आफ्टर ईद वी विल मीट यू विद समथिंग बिग एंड समथिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। रिसर्च ठीक है, एक रफ एंड टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल मेक इट comfortable and we will make something interesting for you guys. So thank you all for your services, and we should end now.
We'll Yes, conclude we are the going to end it, but I would like to thank special thanks to Dr. Hamid Hassan for his time and to Telemed EDU for providing this platform to portray our efforts and our future projects. Thank you so much, sir, Amna, Waqar, Ali Mehdi, Ahmad Ansari, and especially all the team which are going to work with us in the future project. Uh, Thank you so much. I would like to mention their names. I'll be comfortable mentioning their names. So we have here, let me share it. So we have myself, Ahmad Ansari, Muzammil, and Ali Mehdi Bhai, Hamza Salim, Maaz, Ahmad Khan, Nawera Ayub, Mara Siddiqui, Afsan Asim, and Amna Mahmood, and Ahmad Ali Khan. So thank you so much. Now we're concluding it. Thank you so Allah much for Hafiz. coming. Thank you so much.